My dear students, welcome to Mathological. With this session, we are going to start the topic of geometry. Another very important topic, a very important section for all the competitive examinations, whether that is CAT, XAT, SSC, or any examination. And in the CAT, you can expect around 2 to 4 questions from geometry. Okay, so we'll start with the very basic with lines and angles in this session, and then from the next session we'll be starting the topic of triangles. Start karte hain. So let us say we are drawing a line AB, and then we are rotating the line by a bit. So the new line is AD, let us say. Okay, the inclination between the two lines, the little nudge, the inclination between the two lines, this is called theta. This is called the angle between the lines. Angle between the lines. Okay, clear? Now, measurement of angle starts when the two lines are superimposing, then the angle will be 0, absolute 0. Okay, and if this is the complete angle when we are rotating by 360 degrees, okay, this complete rotation implies 360 degrees, and this is called complete angle. And in both cases lines will be superimposed, but otherwise in all the other cases between 0 and 360 लाइंस के बीच में एंगल दिखेगा, दोनों लाइन सेपरेट दिखेंगी, बट 0 और 360 पे बोथ लाइंस विल बी सुपर इम्पोज्ड, एंड दैट इज वाई बोथ एंगल्स आर सेम. ओके, बट 360 is called complete angle. Now there are basically 4 types of angles. Acute angle, which is acute angle. Acute angle, which is less than 90 degrees. Theta less than 90 degrees. So acute angle is between 0 and 90. From 0 to 90 degrees, but less than 90 degrees, that is acute angle. Next is right angle. At 90 degrees, theta is equal to 90 degrees. Third is obtuse angle. And obtuse angle is between 90 and 180, greater than 90 but less than 180 degrees. And angle greater than 180 degrees is called a reflex angle. Reflex angle. So this is between 180 degree and 360 degrees. Okay. And if we make just a point on a line, so this angle is 180 degrees. ठीक है, there are two lines, let us say AB and AC. So angle between AB and AC, if both lines are linear, both lines are part of a same line, then that angle is 180 degrees. Okay, क्या ये part clear है? Now, complementary angles. Complementary angles. So if there are two angles, alpha and beta, and sum of the two angles is 90 degrees, those angles are called, alpha and beta are called complementary angles. Complementary angles. Similarly, supplementary angles.
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैव सम इक्वल टू 90 डिग्रीज और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्रीज. सो इफ देयर आर टू एंगल्स θ1 एंड θ2 एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द सेम लाइन. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी साथ में ही होंगे, रैंडम दो एंगल्स नहीं, ठीक है. सो इफ लेट अस से दिस इज द लाइन and this angle is alpha and this angle is beta and alpha plus beta is 90 degrees, then alpha and beta are called complementary angles. These are complementary angles, okay, ठीक है. or they may be two angles on the triangle, okay. So similarly supplementary angles θ1 and θ2, if the sum is 180 degrees, let us say this angle is θ1 and this angle is θ2, sum is 180 degrees because they are part of a line, ठीक है. एक लाइन पे एक सेपरेट लाइन क्रॉस कर रही है, सो दैट पार्ट ऑफ द लाइन θ1 प्लस θ2, द सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. बेसिकली वी जस्ट ड्रू अ लाइन, ओके. सो दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर बिकॉज द सम इज 180 डिग्रीज, ओके. एंड इफ दैट इज सो, दिस इज द पॉइंट O, this is A, this is B and this is C. So if that is the case, θ1 plus θ2, that is equal to 180 degrees, then A, O and C are collinear. एक स्ट्रेट लाइन होगा AC जिसमें कि O पॉइंट इज देयर. क्लियर है, ठीक है. सो देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC and angle B is equal to 90 degrees. And there are two other angles, angle alpha and angle beta, okay. Now alpha said to beta, you are acute angle, भाई less than 90 degree है तो this is a acute angle, ठीक है. और beta replied, thanks for the compliment. Thanks for the compliment, okay. Because alpha and beta together, they are complementary angles. Sum of them is 90 degrees and both are acute angles. Both are less than 90 degree. So that is why they are acute angles, okay. बस याद करने के लिए, so that complementary और supplementary angles में कभी कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है. Complement when it is a praise, the spelling is with a I, and complementary angles वाला spelling, that is a PLE, complementary, completes, okay. So completes and makes 90 degrees, the sum is 90 degrees. Is that clear? Okay, आगे बढ़ते हैं, ठीक है. So this much we have understood. Now let us say there are, this is A, this is O, this is B, this is C, this is D, and OD is perpendicular to OA, ठीक है. So if this total angle, this is 90 degrees, OD is perpendicular to OA, okay. So obviously the sum of these angles A, B and C, that will be 90 because given a 90, okay. If there is a line drawn, there is a point O on that and there are rays emanating OB, OC, OD and OE. This is A, B, C, D, E, ठीक है. लाइन है हमारा AF. So if line is AF, तो complete angle हमारा this will be 180 degrees. Angle AOF, this will be 180 degrees, ठीक है. So if these angles are separately, this is θ1, this is θ2, this one is θ3, this one is θ4 and this one is θ5. Sum of all these will be 180 degrees. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें तो, ठीक है. बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं सो दैट तुम्हें कहीं पे बाद में कोई डाउट ना रहे. Sum of all these angles will be equal to 180 degrees. क्लियर है, ठीक है. नाउ लेट अस टेक अ पॉइंट, और सारी रेज इसी पॉइंट से एमिनेट कर रही हैं.
ठीक है, let us say the angles are A, B, C, D and E. So the sum of angles will be total 360 degrees. Complete angle है तो sum of angles will be 360. A plus B plus C plus D plus E, this is equal to 360 degrees, one complete rotation. Okay, clear? Now let us take a case of two lines intersecting. There are two lines that are intersecting each other. Let us say this line is AB and this line is PQ. Okay, and angles, let us say, are 1, 2, 3 and 4. Angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4. Now observe angle 1 and 2. Angle 1 and angle 2 को observe करो. Angle 1 and 2 are forming a linear pair. Isn't it so? ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है एंगल 1, बट 1 and 2 आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. तो इफ 1 and 2 आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. सम विल बी 180, दे विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स, isn't it so? ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन PQ. सिमिलरली ऑब्जर्व एंगल 2 एंड एंगल 3, तो ये भी तो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये भी तो सम 180 डिग्रीज होगा. तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, this sum will also be equal to 180 degrees. These are also supplementary angles, isn't it so? And if that is so, angle 1 plus angle 2 भी 180 है, angle 2 plus angle 3 भी 180 है. That implies कि angle 1 and angle 3 these must be equal. तभी तो दोनों में से किसी भी एक को तुम angle 2 से सम कर दो, 180 आ रहा है सम, तो angle 1 must be equal to angle 3. या फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा angle 1 minus angle 3, that is equal to 0. तो angle 1 is equal to angle 3. This is the important property. And these angles, angle 1 and angle 3, these angles, ठीक है, angle 1 and angle 3, these are vertically opposite angles. Vertically opposite angles, ठीक है, they are called vertically opposite angles, but हमेशा vertically opposite होना जरूरी नहीं है, because angle 2 and angle 4, these are also vertically opposite angles. ठीक है, so same as angle 1 is equal to angle 3, by the same logic, angle 2 is also equal to angle 4. And both of these pairs are vertically opposite angles. Okay, clear? क्या ये बात समझ में आती है? Okay, now let us draw two parallel lines. Two parallel lines and a line that is intersecting both the lines. Lines are parallel when they never meet. They are always, the distance between them is always constant. So if this distance is d, here also this will be d only, क्योंकि distance हमारा जरा सा भी increase या decrease करेगा तो lines will always be intersecting. ठीक है, तो parallel lines के केस में, parallel lines, the representation, the parallel lines always have, always नहीं, मतलब at each point they have same distance. The distance between them is always constant. Distance between them is constant. Okay, and this line, the line intersecting both the lines, both the parallel lines, this is called transversal. ठीक है, this line is called transversal. Now due to these two parallel lines and the transversal, number of angles formed कितने होंगे? This is angle number 1, angle 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total 8 angles are formed. Isn't it so? क्या क्लियर है? टोटल 8 एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, ओके. सो नाउ फोकस ऑन एंगल 1 and angle 3. Angle 1 and angle 3. So angle 1 should be equal to angle 3. Why? Because they are vertically opposite angles. Because these angles are vertically opposite angles. Isn't it so? ठीक है, एक सेकेंड. These are vertically opposite angles. Similarly, angle 2 and 4, they are also vertically opposite. Angle 5 and angle 7, they are also vertically opposite.
and angle 6 and angle 8, they are also vertically opposite. So all these angle pairs must be equal because they are vertically opposite angles. Isn't it so? Clear है? ठीक है. Now let us focus on angle 3 and angle 5. Angle 3 and angle 5, they are on the opposite side of transversal line. ठीक है, alternate side of transversal line. That is why they are called alternate angles. Alternate angles. And same as vertically opposite angles, they are also equal. These angles are also equal. So angle 3 is equal to angle 5. Similarly, angle 4 is equal to angle 6 because they are alternate angles. Okay. Angle 1 and angle 7, these are also alternate angles. The only difference is that angle 3 and angle 5, these are alternate interior angles. Interior angles. And angle 1 and angle 7, they are also equal, but they are exterior angles, alternate exterior angles. Similarly, angle 2 and angle 8, they are also equal. They are alternate exterior angles. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हो गए. नाउ watch angle 1 and angle 5. These are corresponding angles. Corresponding angles, and they are also equal. Corresponding angles are also equal. Angles 1 and 5, they are corresponding angles. Similarly, angle 2 and angle 6, they are also corresponding angles. Okay, clear? Now focus on angle 4 and angle 5. They are same side interior angles. Interior angles on the same side of transversal. So same side interior angles. Opposite side interior angles तो हमारे alternate angles हैं. Same side interior angles, and they are not equal. Angle 4 and angle 5, they are not equal, but their sum, angle 4 plus angle 5, this is equal to 180 degrees. Their sum is equal to 180 degrees. Similarly, angle 3 and angle 6, their sum will be equal to 180 degrees. Same side interior angles, their sum will be 180 degrees. और क्यों होगा ऐसा? Because angle 1 and angle 4, ठीक है, logic is that angle 1 and angle 4, they are forming a linear pair. ठीक है, so angle 1 plus angle 4, this is equal to 180 degrees, and angle 1 is equal to angle 4. Angle 1, angle 1 is equal to angle 5, not 4. Angle 1 is equal to angle 5 because they are corresponding angles. Corresponding angles. So by that logic, angle 5 and angle 4, they should be, their sum should be 180 degrees. Isn't it so? क्या प्रूफ समझ में आता है? Clear? That is why angle 4 plus angle 5, that is equal to, sum is equal to 180 degrees. And by the same logic, angle 3 plus angle 6, उनका sum भी 180 degrees होगा. Okay. Clear है? Similarly, we have same side exterior angles as well. Angle 1 and angle 8, they are same side exterior angles. And their sum is also 180 degrees. Angle 1 plus angle 8, this is also 180 degrees. Similarly, angle 2 plus angle 7, this sum is also 180 degrees. So we've covered all types of angles. The first of vertically opposite angles, angle 1 and 3, angle 2 and 4, and so on. Alternate angles, on the alternate side of the transversal, angle 3 and angle 5, both will be equal. Angle 4 and angle 6, equal. And exterior alternate angles, that are angle 1 and 7, angle 1 and 7, or angle 2 and 8. Next we did corresponding angles, ठीक है, on the same side of the transversal, but corresponding angles, angle 1 and angle 5, ठीक है, on the same side of transversal as well as on the same side of the parallel lines.
So angle 1 and angle 5, these are also equal. Angle 2 and angle 6, these are also equal. And then we did same side interior angles, okay, which are inside the parallel lines. So angle 4 plus angle 5, the sum is 180 degrees. These are supplementary angles. Angle 3 plus angle 6, that is also 180. And last में हमने क्या किया? At last we did same side exterior angles. Angle 1 plus angle 8, that sum is also 180. यानी कि they are also supplementary. Is that clear? Okay. Clear है? ठीक है. So that is all about it. क्या है क्लियर है? अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चंस करते हैं स्ट्रेट वाइज. अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी चीज और करते हैं. देखो, these two lines are parallel. Let us say this line is AB and this line is CD. Okay, these two lines are parallel. अब AB को थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं, स्लाइटली टिल्ट कर देते हैं, थोड़ा सा नच देते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं, हल्का सा, माइनर सा. सो इफ वी रोटेट इट जस्ट अ बिट, then what will happen? That after a long time, अभी तो थोड़ा सा लाइन ज्यादा झुका दिया मैंने, बट समझ गए होगे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दीज लाइन्स CD and the line after rotation, these will meet at some point, isn't it? And let us say if this point is P, this point is Q and this point is R. तो PQR पे फोकस करो. ये क्या है? This is a triangle. PQR is a triangle, isn't it so? Lines AB and CD are parallel. ठीक है, AB को रोटेट किया, this line is different, PR is different. Okay, let us say this angle is छोटू सा एंगल, कोई भी एंगल है, मान लो थीटा मान लिया इसको. लेट अस से दिस इज थीटा. सो इफ दिस इज थीटा एंड CD कोई एक्सटेंड किया यार तक, तो CR इज आल्सो पैरेलल टू AB. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, वोंट दिस एंगल विल बी सेम एज थीटा? सो दिस विल आल्सो बी थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा, इजंट इट सो? ठीक है. सो दिस कंप्लीट एंगल इज एंगल 4. ठीक है, दिस कंप्लीट एंगल 4. तो एंगल 4 प्लस एंगल 5, they are supplementary angles, यानी कि sum is 180 degrees. Now angle 4 has two parts, one is theta and let us say this is equal to alpha, this is alpha. So angle 4 is equal to alpha plus theta. Okay, now in the triangle PQR, focus on the angles. One angle is alpha, one is theta, the other is angle 5. तो angle alpha plus angle theta plus angle 5 क्या होगा sum हमारा? Angle alpha plus angle theta, that is equal to angle 4. So sum will be equal to angle 4 plus angle 5 का sum, which is equal to 180 degrees. This is equal to 180 degrees. So the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, is this clear? Okay, or in general, if we have a triangle, A, B, C, we can always make a line parallel to BC that crosses point A. ठीक है, so this line, let us say this is PQ line, so PQ is parallel to BC. Now this angle will be equal to this one. ठीक है, so if this angle is angle 1, this angle will also be equal to 1. Similarly, this angle will be equal to this angle because they are alternate angles, isn't it? So they are equal. So if this angle is 2, this will also be 2. And finally this angle. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3, they are forming, their sum is 180 degrees on the same side of a line. Their sum is 180 degrees. So sum of all the angles of a triangle is also equal to 180 degrees. क्या बात क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एन एंगल इज 3/7 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो लार्जर ऑफ द टू एंगल्स क्या होगा? इफ एन एंगल इज 3/7 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो लार्जर ऑफ द टू एंगल्स क्या होगा? What will be larger of the two angles? So complement है, complement यानी कि sum of the two angles alpha and beta, sum of them is 90 degrees और एक एंगल 3/7 है दूसरे का, so रेशियो क्या आ जाएगा अल्फा एंड बीटा का? 3:7. and sum of the two angles 10 units is equal to 90 degrees. So 1 unit will be equal to 9 degrees और लार्जर एंगल की वैल्यू पूछा है, तो 7 units will be larger angle, तो 7 into 9, 63 degrees will be our answer. Answer will be 63 degrees. Okay. Next question. If 2a plus 5 degree and 13a plus 10 degree, these are supplementary angles. So you have to find the value of a.
What will be value of A? Supplementary angles यानी कि sum will be 180 degrees. तो 2A plus 5 plus 13A plus 10, the sum is 180. तो 15A is equal to 180 minus 15, which is equal to 165, and hence A will be equal to 165 by 15, which is equal to 11 degrees. A की वैल्यू आ गया इक्वल टू 11. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, lines L and M are parallel lines and the transversal line T intersects L and M at P and Q respectively. So we have to find the sum of angles 2A plus B. A given है, B given है, हमें 2A plus B की वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके. So in this case 132 degree and this angle B, this angle and this angle, both are vertically opposite angles. Since they are vertically opposite angles, they must be equal. So B will also be equal to 132 degrees. Okay. Now this angle 132 degrees and this angle, these two angles are alternate angles. Alternate angles on the alternate side of a transversal. So they will also be equal. So this must also be 132 degrees. Now this angle and this angle, they are also vertically opposite. So A will also be 132 degrees. So both A and B are equal to 132. So 2A plus B क्या हो जाएगा? 2 into 132 plus 132. So 3 into 132, answer will be 396 degrees. Option C आंसर हो जाएगा. ओके. क्लियर है? ठीक है. What will be this angle? 132 plus this angle is equal to 180. So this angle will be 180 minus 132, which is equal to 48 degrees. 48 degrees. Similarly, this angle, these two angles are this angle and this angle. These two are corresponding angles, so this will also be 48 degrees and so on. ठीक है. बाकी एंगल हमें निकालने नहीं है, बट ये समझ पा रहे होगे. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द फिगर इफ द एंगल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 2:3, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगा? इन द फिगर if angles A and B are in the ratio 2:3, then find the angle C. So this angle, जहां कहीं पे भी ये दो देखो, दो लाइंस हमारी राइट एंगल पे दिख रही हैं. ठीक है. तो दैट इंप्लाइज कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज. दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्रीज. ठीक है. कहीं पे भी हमें दिया हो कि दो लाइंस हमें गिवन है बिटवीन टू लाइंस. ठीक है. देयर इज अ एंगल और एंगल पे टू परपेंडिकुलर लाइंस आर गिवन, दैट इंप्लाइज दिस एंगल इज 90 डिग्रीज ऑलवेज. ओके. सो दिस एंगल इज 90 और टोटल sum of these angles will be 180 degrees. So 90 plus A plus B, that is 180 degrees. This sum is equal to 180 degrees and question is saying A and B are in the ratio 2:3. So अगर A और B का ratio है 2:3 का, so if angle A is 2 units, angle B is 3 units, तो sum क्या आ जाएगा? 2 plus 3 5 units, और 5 units will be equal to, because 90 plus A plus B is 180, तो A plus B will be equal to 90 degrees. 5 units हमारा हो गया 90 degrees, तो 1 unit हो जाएगा 80 degrees, 2 units हो जाएगा 36 degrees. 2 units will be 36 degrees. Now angle A and angle C पे फोकस करो. Angle A और angle C सेम साइड पे हैं. They are linear pair. They are forming a linear pair. तो A plus C is equal to 180 degrees and hence angle C की वैल्यू फाइंड आउट करना है. C will be equal to 180 minus A. So 180 minus 36. Answer will be 144 degrees. C will be equal to 144 degrees. That will be our answer. A 36 है, B 54 है, C हमारा 144 है. ओके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, two straight lines PQ and RS intersect each other at O. If angle PQT is 75 degrees, then find the difference between angles A and B. What will be the difference between angles A and B? Given is कि PQT तो नहीं है, ये POT है. दिस इज POT. ठीक है. Q तो एंड पॉइंट पे है, तो POT दिस इज 75 डिग्रीज, दिस एंगल इज 75. सो व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन एंगल्स A and B? सो सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल्स A plus B plus 75, this is equal to 180 because they are forming a linear pair. ठीक है. A plus B plus 75, this is equal to 180 degrees. तो A plus B आ जाएगा हमारा equal to 105 degrees. This is our first equation. सेकेंड, समहाउ हमें B की वैल्यू मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा. हमें B की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करें? सो फोकस ऑन RS. These angles B 75
and 4B, they are on the same line, same side of the line RS. ठीक है, so their sum will also be 180. तो B plus 75 plus 4B, this is equal to 180 degrees. Isn't it so? So 5B plus 75 is 180. So 5B is equal to 105 degrees, and hence B will be equal to 21 degrees. B will be equal to 21 degrees. Okay. And 4B, अब चाहे तो यहां से निकाल लो इस इक्वेशन से कि A plus B is equal to 105, B 21 है, तो यहां से A का वैल्यू क्या आ जाएगा? A will be equal to 84 degrees. So A is 84, B is 21, difference will be 60 degrees. या फिर ऐसे सोच सकते थे, अगर ये पहले हमने नहीं सॉल्व किया होता तो A and 4B, these are opposite angles, so angle A will be equal to angle 4B. A और 4B का वैल्यू सेम होगा. So B is 21, 4B will be 84, and that is how A will be 84. डिफरेंस आ जाएगा. तो किसी भी तरह से सोच लो. क्लियर है? ठीक है. जैसे केस हमें 2C का वैल्यू फाइंड आउट करना होता तो उसकी वैल्यू क्या होगा? सिंस A is 84, 2C and A are forming linear pair, तो 2C will be 180 minus 84, so 2C will be 96 degrees. Okay, clear? Next question. If AB is parallel to EF and EF is parallel to CD, then find the value of X. अगर AB और EF parallel और EF और CD parallel है, यानी कि AB, CD, EF they are parallel. Any two of them are parallel. Okay. Question is asking X का वैल्यू क्या होगा? So this angle is 70 degrees and AB and CD are parallel. So this angle will also be 70. X plus Y will also be 70. X plus Y will be equal to 70. Also, CD is parallel to EF. ठीक है. So focus on these two angles, angle Y and angle 150. Their sum will be, they are on the same side of the transversal C, same side of transversal C. So they are same side interior angles. Their sum will be 180. यानी कि Y plus 150, that is equal to 180 degrees. So Y will be equal to 30 degrees. ठीक है. फर्स्ट सेशन है तो हम इतना सब लिख रहे हैं, बड़ी सब चीजें वर्बली तुम्हें करनी है. Y प्लस 150 हमारा 180 है, तो Y विल बी 30, Y विल बी 30, Y 30 है, X प्लस Y 70 है, तो X विल बी इक्वल टू 40 डिग्रीज. ऑप्शन डी, X will come out to be equal to 40 degrees. Okay, clear? Next question. In the given figure, PQ is parallel to RS and EF is parallel to QS. If angle PQS is 60 degrees, then find the measure of angle RFE. RFE angle का measurement क्या होगा? What will be the value of angle RFE? So this angle is 60 and PQ and RS are parallel. So if PQ and RS are parallel, so QS will be the transversal because that will be cutting. So if PQ and RS are parallel, QS is transversal. So angles PQS and QSR, they will be same side interior angles. So angle PQS plus angle QSR, their sum will be equal to 180 degrees. And if that is so, this angle will be 120 degrees. By the same logic, QS and EF, they are also parallel. So if QS and EF are parallel, line RS is transversal, that is cutting these two. So if line RS is transversal, then angle QSF and EFS, they are same side interior angles, QSF and EFS. So their sum will be 180 degrees and hence this angle will also be 60 degrees. Okay, this will also be 60 degrees. Now focus on these two angles. This is 60, this and this, they are forming a linear pair. So this angle will be 180 minus 60. So this will be 120 degrees. This will be 120 degrees. Now just extend this line. So if you extend this line and let's say this point is point T, so TFSQ, this will be a parallelogram because lines TF and QS are parallel, TQ and FS are parallel. ठीक है. So these two lines are parallel, these two lines are parallel. So TFSQ, this is a parallelogram.
and you can observe from here that these two angles, the opposite angles, they are equal. Similarly, this is 120 and this will also be 120, because if you focus on QTE or QTF and TFS, they are same side interior angles, isn't it so? So their sum will also be 180. So this is 60, this will be 120. So vertically तो नहीं बोलेंगे, these two opposite angles in the parallelogram they are equal. ठीक है, they are equal. क्या क्लियर है? ओके, क्वेश्चन ने पूछा था हमसे मेजर ऑफ एंगल RFE, दैट इज 120. ऑप्शन बी इज द आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सारे एंगल्स हमने पता लगा लिए. ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू CD, so find the reflex angle EFG. AB is parallel to CD, तो reflex angle EFG का वैल्यू क्या होगा? ओके, सो कैसे फाइंड आउट करें? हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 34 एंड दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज 135. ओके, सो सम कंस्ट्रक्शन वी मस्ट डू. कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं सो दैट आइडेंटिफाई कर पाए चीजों को बेटर तरीके से. Let us construct a line parallel to both AB and CD that crosses point F. Okay, so this is another line. Let us say this line is G तो already draw किया हुआ है, HI. Okay, this is HI. Now, since HI is also parallel AB and CD, so now AB is parallel to CD and parallel to HI. These three lines are parallel. So if this angle is 34, this angle, since this is alternate angle, this will also be 34 degrees. Similarly, this angle is 135 and this angle plus this one. These two angles are same side interior angles. So their sum will be 180. So this is 135, this angle is 180 minus 35. Sorry, 180 minus 135. So this will be 45 degrees. This angle is 45 degrees, this angle is 34 degrees. So their sum will be equal to, क्या sum आ जाएगा हमारा? So angle EFG, this will be equal to 34 degrees plus 45 degrees, which is equal to 79 degrees. But answer will not be 79 degrees because question हमसे क्या पूछ रहा है? Reflex angle EFG पूछ रहा है. ठीक है, so this angle EFG is 79 degrees, but reflex angle कौन सा होगा? Reflex angle is always greater than 180 degrees. So this is the other angle, this वाला angle. ठीक है, this angle. So this angle will be 360 minus 79 degrees and hence this will be 281 degrees. The answer in this case will be 281 degrees, which is not given in the option. So option D answer हो जाएगा. Option D will be the answer. Okay. So if our angle is less than 180, ठीक है, so if our angle is less than 180, let us say this is A, this is O, this is B. So this is our normal angle. ठीक है, दिस इज एक्यूट एंगल, बट अगर 180 से बड़ा है, लेट अस से ये कंसीडर कर लिया हमने. ठीक है, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2. सो रिफ्लेक्स एंगल विल बी दिस एंगल दैट कंप्लीट्स द एंगल. ठीक है, सो दिस एंगल विल बी 360 माइनस थीटा 1, और इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल दिस एंगल विल बी 360 माइनस थीटा 2. ठीक है, इन द फर्स्ट केस दिस विल बी बिटवीन 270 एंड 360 बिकॉज थीटा 1 हमारा 0 से 90 के बीच में है. तो दिस एंगल 360 माइनस थीटा 1 विल बी बिटवीन 270 एंड 360. सेकंड केस में क्या होगा? दिस एंगल 360 माइनस थीटा 2, दिस विल बी बिटवीन 90 बोल रहा हूं, 180 एंड 270 बिकॉज थीटा 2 हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूस एंगल है. क्लियर है? तो रिफ्लेक्स एंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, द लार्जर एंगल मेड बाय द टू लाइंस, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल. or smaller angle is the normal angle, acute, obtuse, right angle, whichever the case may be. Next question, in the figure AB is parallel to ED, so what will the value of x? x तो है कहाँ पे अपना, कहाँ पे है x? x तो लिखा ही नहीं है, चलो मान लेते हैं x को. Let us say this is x. Okay, this is x. जो x हो गया वो फिर कहाँ मिलता है, कहाँ ढूंढना पड़ता है उसको. चलो, तो हमारा एंगल 62 है. ठीक है, एक गिवन है हमें और एक एंगल गिवन है 144 एंड AB इज पैरेलल टू ED. सो इफ दिस एंगल इज 62, दिस एंगल हियर, दिस विल आल्सो बी 62 बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है.
एंड दिस एंगल, ठीक है, एंगल ECF एंड एंगल DCF, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 180 माइनस 62, तो दिस विल बी 118 डिग्रीज, 180 माइनस 62 118 डिग्रीज हो गया. और दिस एंगल एंड एंगल 144, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर अगेन, तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 144 यानी 36 डिग्रीज हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू, क्योंकि x प्लस 118 प्लस 36 दे आर फॉर्मिंग अ सम 180 डिग्रीज, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल्स है. सो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 118 प्लस 36. सो 180 माइनस हो जाएगा 154. आंसर विल बी 26 डिग्रीज. नाउ अगर तुमने ये क्वेश्चन अपने एंड पे किया होगा, सो तुम में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा और ऑप्शन 36 मार्क किया होगा. एंड इफ यू हैव डन सो और आंसर 36 आया है तुम्हारा, तो एक बार कमेंट में मेंशन करना कि तुमसे गलती हुआ था. ठीक है, तो कैलकुलेशन में हमेशा कॉशियस रहना है, स्पेशली ऑप्शंस को भी देखना है कि ऑप्शंस क्या गिवन है. जैसे यहाँ पे 36 एंड 26 बोथ आर गिवन, तो कई लोगों से गलती होगा, उन्होंने 36 मार्क कर दिया क्योंकि उन्होंने 118 प्लस 36 शायद 144 कर लिया होगा. अगर तुमसे ऐसा गलती हुआ तो कमेंट में मेंशन करना कि तुमने भी ऐसा गलती किया है, और आगे ये ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है. तो इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चों वाली ये नहीं करनी है, हमें अवॉइड करना है. ठीक है, आंसर विल बी 26, ऑप्शन डी विल बी द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. In the figure, if PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR, PQ is perpendicular to PS and parallel with SR, तो find the difference between angles X and angle Y. तो X plus Y का सम तो हमारा 90 है, because PQS is a triangle. तो एक एंगल तो 90 डिग्री ऑलरेडी हमारा गिवन है, तो X plus Y is equal to 90 डिग्री. बट क्वेश्चन हमसे X plus Y नहीं पूछ रहा है, X और Y का डिफरेंस पूछ रहा है. ओके, सो PQ is parallel to SR, so ये both are parallel. So this angle X plus 28, this will be equal to 65 degrees. So x plus 28 is equal to 65 degrees. And hence x will be equal to 65 minus 28, that is 37 degrees. So x plus y है 90 and x is 37, so y will be 53. The difference will be 16 degrees, option B. Difference हमारा आ जाएगा 16 degrees, that is option B. Okay, clear? Next question. If a transversal intersects two parallel lines and the difference of two interior angles of the same side of the transversal is 20 degrees, तो find the larger angle क्या होगा? What will be larger angle? There are two parallel lines and there is a transversal that is intersecting these two lines, and the difference of two interior angles of the same side of the transversal, this is 20 degrees. So if this angle is theta 1 and this angle is theta 2, so theta 1 minus theta 2 will be 20. And since they are on the same side of transversal, so their sum will be 180. So these are the two equations. Add these two. दोनों को ऐड करोगे, थीटा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 थीटा 1 will be 200 डिग्रीज. तो थीटा 1 हमारा आ जाएगा 100 डिग्रीज. एंड थीटा 1 इज द लार्जर एंगल. अदरवाइज थीटा 2 भी निकाल सकते हो, 80 डिग्रीज आ जाएगा. बट लार्जर एंगल विल बी 100. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, ऑप्शन ए विल बी द आंसर इन दिस केस. Clear? Next question. In the figure, PQ is parallel to RS, then find angle BAC. PQ is parallel to RS, then we have to find the angle BAC. क्या होगा angle BAC? This is 50. This is 127. So this angle will be sum of these two angles, 127 and angle QAC. They are supplementary. Sum 180 है, तो this angle will be 53 degrees. 127 plus 53, that is 180. 53 हो गया. This is 50, this is 53. So this angle will be what? This will be 180 minus 50 plus 53. So 180 minus 103. Answer will be 77. Option C. 180 minus 103. Answer will be option C. 77 degrees. क्या ये clear है? So that's all in this session. I believe session में जो भी मैंने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. And from the next session we'll be starting topic of triangles. That's all. Bye bye. Take care. Keep learning.